जिंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीजें हो, अच्छा हो बुरा हो, कभी अंधेरा हो कभी उजाला हो, हर चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी में ग्रेस रखिए हर इंसान की तरफ। हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा। कभी गलत बात भी बोलेगा, ऊंची बात भी बोलेगा। जब आप काम करेंगे, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर नौकरी हासिल करेंगे, आपका हमेशा झगड़ा रहेगा, जो मेरा जूनियर है वो ऐसी बात करता है, मेरा सीनियर जो है ऐसी बात करता है। लेकिन सब जो है जिंदगी से जूझ रहे हैं, ये जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो ग्रेस जो है, वो लीवे जो है, हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ साथ काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है कुछ टीचर्स जो होंगे यहाँ पर बैठे होंगे जो आपके फेवरेट नहीं भी हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, डांटते भी होंगे आपको। उनको सबसे ज्यादा याद रखिएगा जब आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टीचर आपसे स्ट्रिक्ट थे वो एक्चुअली सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सचमुच बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि उनके काम से, उनके नाम से, उनकी छोटी छोटी हरकतों से, उनकी बातों से दुनिया के किस दूर दराज इलाके के अंदर कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बदल जाती है। मैं 9-10 साल का था और मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मुझे दीवार फिल्म देखनी है। और जैसे माँ बाप होते हैं स्टडीज में कमजोर बच्चों के, तो उन्होंने कहा अगर 95% लेकर आओगे तो तुम दीवार फिल्म देख सकते हो। तो मैंने बहुत पढ़ाई की लगन से, 95 नहीं आए, तकरीबन 90 तक आ गए और उन्होंने मुझे दीवार फिल्म दिखाई। उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं बहुत अच्छी पढ़ाई किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आता रहा। थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन श्री अमिताभ बच्चन जी को ये नहीं मालूम कि मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया वो उनकी वजह से था। फिर बड़ा हुआ तो माँ का पल्लू पकड़ के उनको एक बार बोला कि मम्मी मम्मी मुझे हीरो बनना है। मम्मी ने कहा तुम्हारा कद बहुत छोटा है, श्री अमिताभ बच्चन जी जैसे लंबे बनो। तो बहुत लटका, बहुत झटका, जल नेत्री भी की, लेकिन इतना लंबा नहीं हो सका। तो उनके पास गया और उनको कहा मैंने कि मम्मी मैं तो लंबा नहीं हो सका। तो माँ ने कहा नहीं, मैं उनके फिजिकल लंबे कद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके काम के कद की बात कर रही हूँ। जब भी कोई काम करो, जब भी कोई कार्य करो, तो उसे ऐसे करो कि काम को गर्व हो कि तुमने उसे किया है। और वो बात मैंने अपने पल्लू में बांध ली। और अमित जी को ये नहीं मालूम है कि आज भी जब भी मैं कोई काम करता हूं तो ये सोचता हूं कि मेरे माँ के लफ्ज और आपकी इज्जत कभी कम ना हो उस काम की वजह से। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी एंड थोड़े पैसे वाले थे एंड एक टाइम पे उसने मुझे बोला था कि कुछ एटलीस्ट 1 महीने में 10,000 कमा के देखा। बट मैं उस टाइम पे 800 रुपए की जॉब करता था, तो मैंने बोला रुक जा, मैं 1 महीने में करता हूँ। देन मैंने बहुत सब चीजें की, लाइक हर एक चीज कर ली, लाइक गाड़ी धोना भी कर लिया, प्यून का जॉब कर लिया, हर एक चीज कर ली, लेकिन वो 1 महीने में पैसा नहीं जमा कर पाया। तो मेरे से 3,000 ही हुए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो अभी ऐसा है तो कैसे हो सकता है। मैंने बोला मैं कर लूंगा, लेकिन जब पता चला कि भाई उनकी शादी हो रही है तो मेरा सबसे पहले हार्ट ब्रेक हुआ था, बहुत बुरा वाला हुआ था। शांति की दीवार नहीं तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। बट हाँ, उसने मुझे पूछा था कि अब कितना कमाता। अरे तो मैं नहीं बता सकता, बहुत ही फिल्मी स्क्रिप्ट। मैं 10,000 से ऊपर कमा लेता हूँ। क्या बात है। Very nice. Life is not easy at all. There's gonna be challenges. You're gonna get beat down. That's the way life is. You sort of put a mask on your face and you go home and lay in your bed when no one's looking at you, when you don't have to impress anybody and you're yourself. And fear comes in. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future and it scares you. Just that fear paralyzes you. And I just want to ask you today, do you think you have hope? At some point, everything's going to go south on you. Everything's going to go south and you're going to say, this is it. This is how I end. Now you can either accept that or you can get to work. That's all it is. You just begin. You do the math, you solve one problem, and you solve the next one.
And it doesn't matter how you get knocked down in life, because that's going to happen. All that matters is that you got to get up. You have to get up. Whatever experience you're having right now, it has not come to stay. It has come to pass. Sometimes you have to just back up and go within yourself and pray and meditate and recharge your batteries. Go away, clear your head, and then come back and look at it from a different vantage point. Don't operate while you are under the spell or the effect of what's going on. Don't allow your emotions to control you. We are emotional, but you want to begin to discipline your emotion. If you don't discipline and contain your emotions, they will use you. You don't have to force yourself or motivate yourself to think negatively, to be depressed, to beat yourself up over the head, to feel loaded with guilt. You don't have to make any effort to do that. Your mind is on automatic. It will do that by itself. But if you want to begin to move into your own personal greatness, you've got to be willing to go against the tide. You've got to be willing to harness your will and say, in spite of this, I'm in control here. I'm not going to let this get me down. I'm not going to let this destroy me. I'm coming back. You ask me, bro, what do you want? Man, I want to be diamond. Tell me something I don't know. Everybody wants it. But the raw reality of it is everybody don't get it. And the crazy thing is, if you want it, you can get it. It's not like somebody is stopping you, holding a gun to your head and telling you you can't get it. It's a matter of will. It's a matter of hard work. It's a matter of sacrifice. It's a matter of dedication. It's a matter of commitment. The difference is not the genetic code, the potential. It's a guy that's willing to get knocked down, finally tested on fortitude, stand back up, the perseverance to see it through, the never say die attitude. We know the battle ahead. We know the journey ahead is going to get tough. We know we're going to face obstacles. We know it's going to be some discomfort. We know they're going to try to break us. We know they're coming for us. We know that's going to happen already. So let's make up in our minds before the battle that we're going to be victorious. Don't cry to give up. Cry to keep going. Don't cry to quit. You already in pain. You already hurt. Get a reward from it. At the end of pain is success. You're not going to die because you're feeling a little pain. You tell yourself, I won't give up. When that depression hits you, come out of nowhere, you tell yourself, I won't give up. There's no guarantee that because somebody is now down on their luck, they can never come back. Who can guarantee that you can't make it? That you can't have your dream? Who can guarantee that you can't do what you want to do? No one can do that. No one can predict that. You don't know what the possibilities are for your life. Because if you're willing to go through all the battle you got to go through to get to where you want to get, who's got the right to stop you? It's your right to listen to your gut. It ain't nobody's right to say no after you earn the right to be where you want to be and do what you want to do. All we need to do is we look at our dreams, as we get ready to hit the floor. I am blessed and highly favored. I don't care if you sick. I don't care what you're going through. If you not dead, he ain't through with you yet. As long as you waking up, you still in the game. As long as you alive, you can still make it happen. As long as that breath in your nostrils, boo, you still in the game. You still can win. Now get your butt up.